वेलकम टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह हम एक विनिंग शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर हम कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सिखाता हूँ। पहले हम यहाँ से एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर यहाँ से मैं इसका जो मैन्युफैक्चरर है वह भी मैं यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ कैसे ये प्रोडक्ट आते हैं और कौन ये प्रोडक्ट चीप प्राइस पर सेल करते हैं और कौन से कंपटीटर है जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। देखिए मेंबर, हमारे साथ प्रोडक्ट है टॉप 10 प्रोडक्ट टुडे। This mean today is a top 10 product is this one and this and this one. Now I'm going to find a winning part of shipping from these product. So I'm going to select this one, and yeah. So this is not the best product because here's electronic product. We don't sell electronic product because we in the future we facing a lot of issue in the electronic product and the दोबारा जब कोई कस्टमर ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इसका जो वापस ये उसको बहुत खर्च आते हैं। यहीं पे हमारे जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू भी थोड़ा कम होते हैं। तो यहाँ से हम एक विनिंग प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते मेंबर। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये कहाँ पे सेल होते हैं? मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट स्पेन पे सेल होते हैं। देखिए मेंबर, इसका लाइक देखिए मेंबर कितना है, 23K, and 2.2K is comments and 6.3K is a share. So this means this is a winning product. Now I'm going to information and engagement. देख मेंबर, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ कहीं भी स्टार्ट से देख मैं कमेंट्स देखे, लाइक देखे, वाह हा हा लव इंग्लिश साड़ी देखे, every customer, this mean customer love this product language। देखिए मेंबर, ये प्रोडक्ट अभी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, कहीं भी फेसबुक पे चलते हैं इस प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। इन दिस प्रोडक्ट सेल इन शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर। ये एड कहीं क्रिएट हुआ 25 अप्रैल 2024 पर। इस प्रोडक्ट का एड्स क्रिएट हुआ मार्केट में, बस चीन कहीं भी 25, इसका मतलब है 25 2024 पर ये प्रोडक्ट मार्केट में आया था। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग, क्लिक this store. Wow, this is amazing store. This is still in a Christmas tree. As this means this is a Shopify Dropshipping store. The total product is still product is still in this store is a 2K 2461. Now I'm going to the product. This one is newly added. These are the product that sell this seller. So this means these are the newly added product. Now go to newly added product. What type of product they are select? Yeah, this is the niche. This one product. Yeah, when I see this product in here, and this mean this product, this product, this product is here in this store. Now I'm going to collect this one, and now this product sell this price at 2 euro 0.99, and this mean here is a 2 piece. So 10.1 2 piece. Now I'm going to the product listing. So this is a very cheap listing, is a very unique listing. This means now here is the price. There is no sell this one product in the market because here is no any review about this product. So maybe here is some issue. I'm going to click again and all product, and now I'm going to this one product because he has created it 4 day ago. Now the price is 39.99 euro. Now I'm going to here's this only this product. Now I'm going to find another product. Here is some issue. We don't find some review about here. If we review about here in this product, we can find easily. Now I'm going to again. Now I'm going to click this one and click, and now where you sell this product in the store. Now we see here this product sell in TikTok and Amazon.sa, Amazon.sa, and many more that sell Amazon UAE में सेल भी होते हैं, Amazon इंडिया में भी होते हैं, DA कनाडा में भी सेल होते हैं।
So now this means this product sell at a very cheap price in Amazon. So here are some demand in this product. Now I'm going to show you the price of this product in Amazon.sa. Now I'm going to um, this mean, yeah. This product is launched nearly in this month, because the review of this product is 3.99 and 99% and 19% customer unsatisfied from this product. Here's some issue. We launched this product because we solved this 19% customer issue before we launched this product in the market. So this means here we are going to apply some filter. Show me the review that provided is only one. Wow, niche. This mean so this is another language. Dishwasher filter Mahabut. Oh, this is maybe it's another language. We don't understand about this language. So this means this product sell with cheap price in year and now we sell here as Amazon.sa concept. कितने पे सेल होते हैं यहीं पे? सो मैं आपको अगेन यहीं से लेके आता हूँ प्रेरित मेंबर आपको मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस में मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस में आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट का अली एक्सप्रेस में क्या प्राइस है। यहाँ से मैं आपको इजली टिकटॉक पे भी ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस पे ढूंढूँ। यहाँ से हमने इस प्रोडक्ट का अली एक्सप्रेस में मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लैंग्वेज ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में, क्योंकि ये स्पेनिश में है मेरे ख्याल में। And now I'm going to universal bathroom. This one has a filter. Now I copy and AliExpress. Now I search AliExpress, AliExpress. Click and set take some time. Show me its amazing interface. Now click again. I'm sorry, and AliExpress. So now I'm going to paste the copy. Now click enter. Yeah. So here this product sell as a 6, 29, 1, 22, 1 is a different type of process. Here this in 20. And this sell here is like how much this sell here and this seller. And this sell here is out of stock, currently is not available. Now I'm going to show you another product. This means here's a cheap price we can sell easily in Shopify Dropshipping Store. This is the easy method you can find Shopify Dropshipping Store and launch our Shopify Dropshipping Store. Thanks for watching this amazing tutorial. See you next time.